Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel. So, this is probably the first video I'm putting on YouTube as part of मैथमेटिक कॉन्सेप्ट सीरीज। और इस सीरीज में हम ऐसे सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो राइट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट दिस सीरीज स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स, which is a very easy topic but many a time considered as one of the most confusing and difficult one by the students. First of all, we should know what is a probability. So probability, as per the definition, is a measure by which we get to know the likelihood of an event to occur. बेसिकली किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स में दो तरह की इवेंट्स होती हैं। वन इज फिक्स्ड, इफ आई टेल यू टू ऐड 2 फॉर 100 टाइम्स तो उसका सम जो है वो 200 ही आएगा, चाहे मैं कितनी बार ट्रायल करूं। बट अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक कॉइन को टॉसअप करिए और उसमें हेड या टेल आएगा तो इट्स डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। व्हाई? बिकॉज कॉइन का रिजल्ट फिक्स्ड नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर। आपने कितना टॉर्क लगाया, हाउ इज द बिहेवियर ऑफ एयर, फ्रिक्शन, एनवायरमेंटल कंडीशंस, एवरी टाइम द आउटकम में वेरी। ऐसी इवेंट्स को स्टोकास्टिक इवेंट कहते हैं, स्टोकास्टिक इवेंट्स। और इनका रिजल्ट, इनका जो आउटकम है, कैनॉट बी प्रेडिक्टेड in a fixed way, or that's how the concept of probability has come in mathematics. So ऐसे events जो stochastic events हैं, इनका result कैसे predict करते हैं? We do experiments. A set of experiments are carried out, and based on the results we obtain, we predict their chances of occurrence. Now, coming on to the basic concept of probability is number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. What does it mean is, suppose मैंने एक कॉइन टॉसअप किया, सो उसके अधिकतम कितने रिजल्ट्स हो सकते हैं? दो। ईदर इट विल बी हेड ऑब्लिक टेल। सो टोटल आउटकम्स विल बी 2. इफ आई हैव टू से टोटल आउटकम्स, इट विल बी 2. So I can write total outcomes 2. And what are my favorable outcomes? If favorable outcomes, if I have 2, so favorable outcome, either I want head oblique tail, so I will have only 1. So the probability will be 1 by 2. Simple. Similarly, agar if I have to roll a dice, so dice mein there are 6 numbers, 1 2 3 4 5 6. When I roll a dice, so there may be 6 different outcomes. The total number of outcomes would be 6. But if I want only 3 to be on the face, so 3 may occur once out of 6 times. So the probability will be 1 by 6. This is how the basic concept of probability. Now, before we go deep down into probability, we need to understand some basic definitions and some basic concepts of probability. What are equally likely events? ऐसी घटनाएं जिनके घटित होने की संभावना बराबर है। For example, if I toss up a coin, head and tail both may occur, so they are equally likely. If I roll a dice, out of 6 numbers, any number may come up. So 1 से 6 तक में किसी भी संख्या के ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी? All numbers are equally likely to come up.
when I roll a dice. Now similarly, complementary events कैसे होते हैं? Complementary events are the events that states if one category of event happens, the other category will not happen. For example, आज मैं प्रिडिक्ट करूं कि बारिश होगी, सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि बारिश या तो होगी या तो नहीं होगी। मोहित 10 में पास होगा या तो नहीं होगा। सो अगर एक घटना घटित होगी तो दूसरी नहीं होगी, अगर दूसरी होगी तो पहली नहीं। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। और इन दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता का योग जो है, दैट ऑलवेज रिमेन्स 1. That means probability of event A plus probability of event B in case of complementary events would be 1. Some basic formulas of probability you must note. Probability ranges between 0 to 1. Probability की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। रूल ऑफ एडिशन सेज अगर दो प्रोबेबिलिटी को हमें जोड़ना है, probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Simple formula of set theory. Complementary events I discussed earlier. दोनों की probability का योग हमेशा 1 होता है. Disjoint events are kind of complementary events only. ऐसी घटनाएं जो एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है, दोनों के बीच का संबंध is nil. So P A intersection B, any relation between the two is 0. इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए उन दोनों प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई कर देते हैं. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज गिवन that particular event has happened, let's say B has happened, and then if I want to predict the probability of A, so the formula goes probability of A intersection B divided by probability of B. This is a basic formula. We'll see the detailed description of these formulas and implementation in terms of question in next video. Now coming on to Bayes' theorem. This is again a very important theorem and very easy to understand. What does it mean is, it predicts the probability of an event based on the condition of occurrence of other event. This is also termed as conditional probability. इसे conditional probability भी बोलते हैं. And formula you can easily write down. Implementation of Bayes' theorem will study in next video by means of question and answers. Now come on to some important aspects of probability जहां से questions बनते हैं. We need to understand the basics of these questions. Coin, बहुत सारे questions coin से बनते हैं. Now coin का sample space, that means total number of outcomes are 2, either head or tail. अब if I roll 2 coins together, तो टोटल रिजल्ट्स जो होंगे वो होंगे 2 to the power 2, दैट मीन्स 4. अगर 3 कॉइन एक साथ रोल करते हैं, देन टोटल रिजल्ट्स वुड बी 2 raised to power 3, that is 8, as you can see on the picture. अब इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे ऑन द व्हाइट बोर्ड इन नेक्स्ट वीडियो. फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 कॉइन्स एक साथ टॉसअप की, तो टोटल रिजल्ट्स 4 ऐसे होंगे, इधर हेड हेड और हेड टेल और टेल हेड और टेल टेल. नाउ डाइस का सैंपल स्पेस विल बी 1 to 6, maximum number of outcomes. So let's say I have a question, what is the probability of getting a sum of 10 when 2 dice are thrown? 2 dice अगर हम थ्रोन करेंगे तो पहली डाइस का सैंपल स्पेस 1 to 6, दूसरी डाइस का सैंपल स्पेस 1 to 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 raised to power 2, 36, जो कि पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है. अब ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है जहां पर आपको सम 10 मिल रहा है? सो कॉम्बिनेशन वुड बी
either 6-4, 5-5 and 4-6. सो तीन आपके फेवरेबल चांसेस है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 3 divided by 36. Now I leave a question to you. A dice is thrown. What is the probability that the number is a composite number? Composite number कैसे प्राप्त होगा? This is a very simple question. You can solve at your time. Similarly, cards. एक deck of cards होता है जिसमें total number of cards are 52. जिसमें से 26 black cards होते हैं, 26 red cards होते हैं. If I talk about face cards, so there are a total of 12 face cards you can see on the picture. तो इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. सम ऑफ द सैंपल क्वेश्चंस आर रिटन डाउन. डिटेल्ड क्वेश्चंस विल सी इन व्हाइट बोर्ड इन नेक्स्ट वीडियो. लाइक इफ आई वांट टू ड्रॉ अ ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड कितने हैं टोटल? 26. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 26 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस कितना होगा? 52. क्योंकि 52 पत्ते निकाल सकते हो, 52 रिजल्ट्स हो सकते हैं एक ड्रॉ में, 52 तरीके के रिजल्ट्स हो सकते हैं. हार्ट्स कार्ड, हार्ट कितने में आता है? जो हार्ट है वो 13 कार्ड्स हैं हार्ट के. सिमिलरली फेस कार्ड 12 फेसेस हैं, सो 12 डिवाइडेड बाय 52. ड्रॉइंग अ कार्ड नंबर 4, ऐसे कितने कार्ड्स हैं जिनमें 4 लिखे हो? देयर आर 4 कार्ड्स जिसमें 4 लिखा हुआ है, सो 4 डिवाइडेड बाय 52. So this is very simple. With this I end the first video on probability. Now question and answer session will be covered in whiteboard. Stay tuned. Please like and subscribe if you find this video useful. Goodbye.